हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी हो रहे हैं 6:10 और वेल वॉचिंग के लिए हम पहुंच गए हावर। और पीछे ये वाली हमारी बोट है आज की फेरी। और 1 घंटा लगेगा शायद हमें पहुंचने में जहाँ पे ये ले जाते हैं। तो हमें अब टी मिली है और हमारा ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। एलवी जो हमें कल मिली थी। और हमें ये लाइफ जैकेट दी थी पहनने के लिए और ये मैंडेटरी ऐसे पहन के बैठना। Also, but the common one is the blue whale, the largest animal living on our planet. And we can keep a hope to see some dolphins and turtles also. But I can guarantee just 50% because we focus on whales. And we don't use any equipment like radar or sonar to find them. We find them by their water spout. If you see them before us, tell us. It's much easier. And if it is much windy at deep sea, waves can be rough. It will cause to make you sick. If anyone feel like sick, just before you vomit, tell us and go to downstairs. It will help you to avoid that sickness. And I should tell you about no whale sightings also. It's very rarely happens, like once, twice for 3 months. But since last week, we saw them very close to the land because the beginning of whaling season is December to May. So don't keep a doubt about that. And breakfast will be given around 7:30. Washroom at downstairs. I will tell you about their behavior and identifications after we seeing them. Thank you. Big dolphin. Big dolphin.
Tail up. तो गाइस मैंने वेल वॉचिंग करी और सिर्फ एक या दो नहीं काफ़ी सारी वेल्स देखी और अब हम लोग हार्बर वापस पहुंच रहे हैं और सिर्फ वेल्स ही नहीं डॉल्फिन्स भी देखी मैंने। ये सबको रिकमेंड करूँगी जो लोग श्रीलंका आते हैं और इस टाइम स्पेशली यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया था कि ब्लू वेल का सीज़न है अभी तो बहुत ईजीली स्पॉट कर सकते हो और सच में बहुत सारी वेल स्पॉट करी है मैंने। और मॉर्निंग में स्टार्ट होता है ये क्रूज़, आपको पहले टी मिलती है और कॉफ़ी मिलती है, फिर ब्रेकफास्ट सर्व होता है 7:30 और 8:30 तक आप एकदम मिडिल में होते हो और 8:30 से लेकर के 11 o'clock तक हमने पूरी वेल को चेस करा है और उसके बाद जब हम वापस रिटर्न हो रहे थे तो अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें फूड सर्व करे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा श्रीलंका में। तो अब हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन का वेट कर रहे हैं जो हमें मॉर्निंग में जिसने ड्रॉप किया था और ट्रांसपोर्टेशन भी इनकी तरफ से फ्री होता है। तो बाकी सारे ऑटोज़ चले गए लेकर के, मैं और ये पीछे वाले और मेरी फ्रेंड हम लोग बचे हैं बस अब। लेट्स गो। तो अब हमारे लिए अरेंज करवा रहे हैं वो ऑटो और अब हम जा रहे हैं। आज एक्चुअली मुझे दूसरी जगह भी जाना है शाम को, अभी लंच करके चेकआउट करके फिर दूसरी सिटी के लिए निकलूँगी। तो मैंने अब चेकआउट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ दूसरी सिटी की तरफ जो कि है